Oswal's webinar series. Today we will discuss about one strategy which works quite well in intraday trades of Nifty as well as in BankNifty. Hope you guys can see my screen wherein a PPT is there of understanding technical pattern and the intraday strategy. So we'll start with the basics first, wherein I will just discuss about how technical works, how a candlestick pattern or a bar chart looks like, and then we'll move to the strategy so that if someone is present, they can also understand the same thing. Okay. Now, when it comes to charts, a chart is everything like we always say a single word that a small kid learns very fast. Okay, so they have so there are certain reasons behind that like they have good grasping power, they have a clean slate wherein you can write anything, so that they learn very sharp and very fast, but we never find out the reason behind that. Okay, so the main reason behind that is the pictures, the stories, the videos. Okay, so when we write A for apple, okay, so the kid learn from that picture of the apple. Okay, if you just write APPLE apple, okay, so अगर आप खाली apple लिखोगे A for apple, तो बच्चा नहीं सीखेगा. He will learn, or he or she will learn from the picture of apple. B for bat, so a bat picture is there. C for cat, तो वहाँ पे cat बना हुआ रहेगा, एक बिल्ली रहेगी वहाँ पे. So people kids generally look at the pictures and they learn. Okay, so our mind has some weakness and some strengths. So when it comes to the strength part, the videos are our strength of the mind. Pictures are the strength. Stories are the strength. Pregnancy is strength. ओके आप एक बार कोई जलेबी वाले की दुकान के बाहर से जाओ और नेक्स्ट टाइम व्हेन यू क्रॉस दैट लाइन और आपका आंख पे अगर पट्टी बंधा देन आल्सो यू कैन से कि ओके आई एम इन द सेम एरिया. ठीक है, बिकॉज वो फ्रेगनेंस आपको अट्रैक्ट करता है. सो दीज आर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर माइंड, वेयर एज वीकनेस इज द रीडिंग पार्ट. ओके, द नंबर्स आर वीकनेस. Okay, I'm saying this is the weakness on majority of people, not everyone. There are few people who have the reading habits and they can read for hours. There are people who are very good at maths and they keep on doing calculations. But for majority of people, reading numbers are the weakness of our mind. Now, the charts basically depicts the numbers in a pictorial form. Okay, so whenever you look at chart, you can find out the numbers behind the same. Okay, so when I say I'm looking at the candlestick chart, so I can clearly see कि price कहाँ से कहाँ तक गया है. Okay, it started moving higher from say 100 rupees, it went up to 200 rupees. Every day क्या open हुआ है, क्या high बना है, low बना है, close कहाँ पे हुआ है. So all this data is clearly visible in the chart. So basically what we are doing, we are converting numbers into charts, okay, through softwares, and that picture, that chart speaks 1,000 words. Okay, now there are some basic principles or the assumptions of technical analysis. So the first assumption is price discounts everything. गुजराती में एक कहावत है, भाव भगवान छे. ठीक है, तो जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज आ रहा है, most of these news already gets discounted by the price. Okay, तो उसका भाव के ऊपर असर दिखेगा. अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, नेगेटिव न्यूज आ रहा है, वो प्राइस में दिखने लग जाएगा. प्राइस, और आई कैन से अ चार्ट विल गिव यू अ बाय और सेल सिग्नल मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग 100% because it's a probability game, it's not a certainty. So most of the time you will get some or other like patterns or some signal जहाँ पे आपको इंडिकेशन ये हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आ सकता है और नेगेटिव न्यूज. वी आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ न्यूज वुड बी देयर. वी आर जस्ट अवेयर कि क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है. ओके, देन देयर इज वन मोर assumption which is very important and crucial, which is the history repeats itself.
So the psychology of traders remains constant. Okay, so every time a new traders keep on coming into the market, और पुराने है वो निकलते भी हैं, but the psychology remains same. Okay, now if we look at the overall chart structure, so many patterns keep on repeating, और उसके बाद में जो price movement आता है वो भी same way से होता है. Okay, so that's why we give lot of importance to the historical price data, and according to same we try to predict the future price movement in the stock or in the script. Okay. Now this is how a line chart looks like. Line chart basically means a closing price. Closing price of each day. For example, if you are looking at the daily chart, then every day's closing price you connect and you will get the line chart. So looking at the line chart, you can't figure out where the price opened, what it made a high, low. You will just get to know about the closing price. ठीक है, मैं हिंदी में भी रिपीट करता हूँ. लाइन चार्ट में आपको खाली क्लोजिंग प्राइस पता चलेगा कि भाव कहाँ पे बंद हुआ है. ओके, अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो लाइन चार्ट में आपको ये पता नहीं चलेगा कि आज के दिन में ओपन कहाँ पे हुआ था, हाई क्या किया था, लो क्या किया था. आपको जस्ट इतना पता चलेगा कि ये क्लोज कहाँ हुआ था. सो इट गिव्स अस अ इंफॉर्मेशन, बट पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है जो कि हम लोग के लिए रिक्वायरमेंट है. ओके, then the next type of chart which is very famous, or I can say many people uses, is the bar chart. Okay, now bar chart gives us all the information like where the price opened, what it made a high, what's the low price, and where it closed. Okay, so the left hand side tick is always the opening price, and the right hand side tick is always a closing price. Okay, so when you see this kind of bar wherein the left hand side tick is lower and the right hand side tick is at higher level, it means it's a positive bar. Means the price closed at lower levels and it closed at higher levels, and the highest of the bar is the high price and the lowest of the bar is the low of that particular bar. Okay, if you are looking at the daily chart, then it's a high and low of the same day. If you are looking at hourly chart, then it's a high and low of that particular hour. Okay, so अगर आप daily chart देख रहे हैं, then the left hand side जो tick bar आया हुआ रहेगा वो आपका opening price है, right hand side जो bar आया हुआ है वो closing price है, this is the high price और ये है वो low price है. ठीक है, so looking at bar chart we can figure out कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ पे क्लोज हुआ था, हाई क्या किया था, लो क्या किया था. So entire information is available in the bars. Okay, now this is how a bar chart look like. You can use any software. Okay, if in fact मोतीलाल ओसवाल का जो terminal है, in fact mobile app है, there also you can find out this bar chart, the candlestick charts. And the strategy which I will share today, this is very easy to understand and yet very effective. Okay, so वो strategy आप आपके मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, आप टर्मिनल में जो चार्ट ओपन होता है उसमें कर सकते हैं, and it's very easy to understand. ठीक है, so this is how a bar looks like. Now the data which is available in bar, open, high, low, close, the same kind of data is available in candles also. Okay, but the only difference is bar में many people get confused कि उसका opening कहाँ पे है, closing कहाँ पे है, whether it's positive bar or negative bar like that. But in candlestick it's very easy to understand because of its color. Okay, so if this is a positive candle, then the color would be green. If it's a negative candle, then the color would be red. Okay, or depending on the software, it can be blue, it can be black like that. Now in candles, if the opening price is there and this is the closing price, it means the price closed above the opening price. मतलब ये positive candle है. Price जब
ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाके बंद होता है तो वो पॉजिटिव कैंडल है, और जो हाई बना वो हाई हो गया, लो बना वो लो हो गया। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज, जहां पे ओपन हुआ और जहां पे क्लोज हुआ, उसका जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज अ बॉडी ऑफ द कैंडल। ओके, नाउ इन बोथ दिस कैंडल, दिस इज अ पॉजिटिव कैंडल, दिस इज अ नेगेटिव कैंडल, बट जो डिफरेंस है ओपन और क्लोज का, उसको हम लोग बॉडी बोलेंगे या फिर रियल बॉडी बोलेंगे। और जो ये है क्लोजिंग से हाई का यहाँ पे पॉजिटिव बार में, एंड नेगेटिव बार ओपनिंग टू हाई का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज अपर शैडो, और यू कैन कॉल इट अ विक, अपर विक। इन पॉजिटिव बार जो ओपन एंड लो का जो डिफरेंस है, एंड इन नेगेटिव कैंडल जो क्लोज और लो का डिफरेंस है दैट इज नोन एज अ लोअर शैडो और अ लोअर विक। ठीक है, सो दिस this is like a very easy explanation of how a candle looks like. Okay, जहां पे ओपन हुआ उसके ऊपर क्लोज हो रहा है देन इट्स अ पॉजिटिव कैंडल, जहां पे ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज हो रहा है देन इट्स अ नेगेटिव कैंडल। ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन दी हाउ द कैंडल लुक लाइक। ओके, अभी तक मैं स्ट्रेटेजी पार्ट में नहीं आया, स्ट्रेटेजी अब डिस्कस करूंगा कि स्ट्रेटेजी हम लोग को कैसे करना है। ओके, दैट स्ट्रेटेजी यू कैन लुक एट either in bar chart or you can look at in candlestick chart. Okay, now we'll move to the strategy. So our strategy is 3-bar reversal pattern. Okay, so this will consist of 3 different candles, or you can say 3 different bars, and the best part of this strategy is your entry point is predefined, your stop loss is predefined, your target, or I can say the exit is predefined. So you have all the levels with you. If that level comes, you just take an entry. If it doesn't come, then wait for the next signal. Simple. Okay, stop loss is very small because since it's a intraday strategy, and this strategy have an accuracy of more than 65%. Now we'll come to the strategy. Okay, मैं स्ट्रेटेजी हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा so that everyone can understand it. Okay, now the first one is the both bottoms not broken, which is BBNB. ये आपको सिंपल बताता हूँ, इसके कुछ रूल्स है। सो योर प्रीवियस ट्रेंड कैन बी एनीथिंग, जो आपका पहले का जो ट्रेंड है वो कैसा भी हो सकता है। ओके, इट कैन बी अप ट्रेंड, इट कैन बी डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट है, कैसा भी मार्केट हो कुछ भी चलेगा। ओके, सो फर्स्ट कैंडल और फर्स्ट बार कैसा भी हो सकता है। इट कैन बी ग्रीन बार, ग्रीन कैंडल, इट कैन बी रेड कैंडल, और ये बड़ा कैंडल हो सकता है, छोटा कैंडल हो सकता है, डोजी हो सकता है, हैमर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। आई सिंपली सेड कैसा भी हो सकता है। वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट द हाई एंड लो ऑफ द कैंडल। ओके, now your second candle must make a lower high and lower low. Okay, so let's do one thing, let's draw a candle here. Can you guys see the paint, a blank screen? Okay, yeah, so great. Now एक काम करते हैं, हम लोग एक कैंडल्स बनाते हैं यहाँ पे। So let's draw a candle. Okay, so this is the first candle. I said it can be anything, ये green color or red color हो, कैसा भी हो सकता है. We are just concerned about high and low. First candle कैसा भी हो सकता है. Okay. Now second candle का क्या rule है? Second candle must make a lower high and lower low. Okay. So उसका सिंपल है कि जो प्रीवियस हाई है उसके नीचे सेकंड कैंडल का हाई होना चाहिए, और जो लो है वो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए. ओके, सो यू कैन सी इसका जो हाई था उसके नीचे ये हाई है, इसका जो लो था फर्स्ट कैंडल का उसके नीचे ये लो है. सो द सेकंड कैंडल मेक अ लोअर हाई एंड लोअर लो. नाउ द थर्ड कैंडल व्हिच इज द मोस्ट क्रूशियल वन. In the third candle, your first candle low
this low should not get breached. ये लो breach नहीं होना चाहिए, तो automatically क्या हो जाएगा कि last दोनों candles का low breach नहीं होगा. If first candle's low doesn't get breached, then second candle automatically नहीं होगा because इसका lower low है. So that's why the pattern is known as both bottoms not broken. ये last दोनों दिन का जो low है वो break नहीं हुआ है. Okay. Now you again draw the third candle. Now third candle must move above the high of second candle. एक तो थर्ड कैंडल में लास्ट दो दिन का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए. Then third candle must move above the high of second candle. In that scenario, we need to take a buy entry. यहाँ पे हम लोग का buy entry हो जाएगा. ओके, आई विल कम टू एवरीथिंग कि कौन सा टाइम फ्रेम देखना है, सब कुछ मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा. दिस पैटर्न आई विल एक्सप्लेन यू इन डेप्थ. ओके, नाउ सो दिस इज हाउ अ BBNB लुक्स लाइक, जहाँ पे फर्स्ट कैंडल कैन बी एनीथिंग, सेकेंड कैंडल मस्ट ब्रेक अ लोअर हाई लोअर लो, एंड इन थर्ड कैंडल इट मस्ट ब्रेक अ हाई ऑफ सेकेंड कैंडल, और लास्ट दोनों कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए. Okay, so these are the rules. You just go through it. So I'm just repeating. The first bar or the first candle can be of any shape, any color. Body छोटा हो, बड़ा हो, एकदम छोटा हो, hammer हो, doji हो, anything can be done. Just high or low हम लोग को देखना है. Second candle must make a lower high and lower low. Third candle must not break the लो ऑफ प्रीवियस टू कैंडल्स. हाँ, ये ध्यान रखना है कि लास्ट दो दिन का जो लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. इफ यू आर लुकिंग एट डेली चार्ट, इफ यू आर लुकिंग एट आवर्ली चार्ट, तो लास्ट 2 घंटे का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए. ओके, टेक बाय एंट्री विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ लो ऑफ सेकंड कैंडल. ओके, सो दिस लो, this would be your SL. जो सेकेंड कैंडल का लो था वो आपका स्टॉप लॉस हो गया. नाउ फॉर एग्जांपल द हाई ऑफ सेकेंड कैंडल वाज से 100 एंड द लो ऑफ सेकेंड कैंडल वाज से 95. सो द हाइट ऑफ सेकेंड कैंडल इज 5 rupees. ओके, सो वी आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ 5. ओके, सो 100 रुपए जैसे क्रॉस होता है वी आर टेकिंग अ बाय एंड अवर रिस्क इज 5 rupees. So our target would be 10 rupees. We are keeping a risk reward of 1:2. Simple. Now, so just take a buy entry when the high of second candle get crossed. Okay, I am not waiting for a closing price for some reasons. Okay, I will show you that reasons also, because there is a possibility कि third candle का जो close है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाए, so वो possibility भी है. So I am just looking at the high जैसे cross होता है you can look for buying opportunity, and the low of the second candle would be your stop loss. Risk reward I explained कि जितने रुपए का आपका stop loss है उसका double आपका target होना चाहिए. And once your 1:1 risk reward is achieved, trail stop loss above your entry price. For example, आपने 100 rupees में buy किया, 95 का आपका stop loss है, and if the stock moves to 105, then you need to revise your stop loss at 100 or above 100. Okay, you can use any of your existing system for the trailing stop loss method. Okay, now this is how a structure or the rules of BBNB. Now let's move to some example. मैं पहले example stocks के बता रहा हूँ so that it would be easy for you to understand. But this strategy works well in Nifty and BankNifty. उसके भी examples बताऊंगा. Okay. So this is how a BBNB looks like. Okay. So first a red candle. I said candle color कुछ भी हो सकता है. We are just concerned about the high and low. Second candle made a lower high and lower low. And third candle, okay,
it made it did not break the low of previous two candles. लास्ट 2 दिन का लो ब्रेक नहीं हुआ, और जैसे ही सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक होता है, you need to take a buy entry. Now I said I'm not waiting for a closing price for third candle. You can see here also कि सेकंड जो कैंडल है वो क्लोज काफी ऊपर हुआ है. See, if we wait for a closing price, definitely our accuracy can be better, but we will miss out some move. Okay, so यहाँ पे क्या हो गया कि 1100 में जो बाय सिग्नल आया था, क्लोजिंग केम समवेयर अराउंड 1125 लेवल्स, तो 25 रुपए आपका ऑलरेडी मिस हो जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ अ BBNB looks like. Now this is again a daily chart of Coal India. You can see here lower highs, lower lows in these two candles. Third candle, when it moves above the high of second candle, you take a buy, and this low would be the stop loss. Again the same thing. Okay, now in these examples you can clearly see that closings are too high. Okay, that's why in intraday, as and when the high gets breached, you just take a buy entry. Okay, with a strict stop loss. Since, see, one thing you need to make it very clear that you are taking a trade against the trend, or I can say it's a reversal pattern. Okay, so reversal pattern है, तो उसमें आपको strictly stop loss follow करना है. Okay, anyways, in any kind of system, stop loss must be followed strictly. Stop loss are meant for the same. Okay, but इसमें आपको एकदम क्लियरली फॉलो करना है. सो जैसे ही सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक होता है, यू टेक अ बाय एंट्री, और जो लो है उसका आपका स्टॉप लॉस हो गया. अगेन दिस इज, हाँ, अभी यहाँ पे देखो, आप अगर देखोगे तो दोनों कैंडल ग्रीन है और थर्ड वाला कैंडल भी ग्रीन है. सो पहले आई ऑलरेडी सेड कि योर कैंडल कलर, कैंडल बॉडी कैन बी एनीथिंग, खाली हाई और लो देखना है. तो हाई और लो इसमें क्या है, लोअर हाई लोअर लो, एंड थर्ड कैंडल जैसे ही सेकंड कैंडल का हाई क्रॉस होता है, यू टेक अ बाय एंट्री, और लो का आपका स्टॉप लॉस हो गया. ओके, नाउ दिस इज अगेन अ BBNB एग्जांपल, एंड दिस वन इज द फेल्ड BBNB, जहां पे आपको बाय सिग्नल दिया था एंड इट इमीडिएटली मूव बिलो द लो एंड हिट योर स्टॉप लॉस. तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आपको वो एग्जिट करना है. ओके, नाउ दिस इज द 30 मिनट्स चार्ट ऑफ निफ्टी, और ये स्ट्रेटेजी जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे चार्ट्स में इट वर्क्स वेरी वेल. यू कैन यूज इट एदर 15 मिनट्स, यू कैन यूज इट एदर 30 मिनट्स और 5 मिनट्स चार्ट. 5 मिनट चार्ट यूज करो, 30 मिनट्स यूज करो, या 15 मिनट्स करो. BBNB का फुल फॉर्म बोथ बॉटम्स नॉट ब्रोकन. ठीक है, नाउ दिस इज हाउ अ BBNB गॉट फॉर्म इन 30 मिनट्स चार्ट. ये 2 दिन पहले का निफ्टी का चार्ट है, जहाँ पे थर्ड कैंडल में BBNB गॉट फॉर्म, और BBNB बनने के बाद में वो पूरा दिन ट्रेंडिंग ही रहा है. सो आवर टारगेट इज 1:2, सिंपल. तो ये जो सेकेंड कैंडल का जितना हाइट है उसका डबल अपना टारगेट रहेगा. आई विल कम टू द लाइव चार्ट्स आल्सो. सो फर्स्ट लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स, देन विल मूव टू द लाइव चार्ट्स, कि जहाँ पे हम लोग लाइव पैटर्न्स भी देखेंगे कि कैसे उसको विजुअलाइज करना है. ओके, नाउ दिस इज अ 15 मिनट्स चार्ट ऑफ निफ्टी ऑफ लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस. ये थर्सडे का चार्ट है, एंड दिस वन इज ऑफ मंडे, लास्ट 2 दिन का. नाउ ऑन थर्सडे इट फॉर्म अ BBNB ऑन 15 मिनट्स चार्ट एट 11 AM, और उसके बाद में ट्रेंड अच्छा खासा 1:2 यू कैन इजीली सी हो गया. अगेन इफ यू लुक एट दिस 3 कैंडल्स, यहाँ पे BBNB ऑलरेडी अपना हुआ था, उसके बाद में फिर से BBNB आया. यू कैन अगेन टेक अ बाय एंट्री. इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग लॉन्ग फ्रॉम दीज लेवल्स, then you can trail your stop loss to this low now. पहले वाले का भी ट्रेल करके ये लो का स्टॉप लॉस कर सकते हो. ओके, वो कंटिन्यू हुआ, और yesterday it gave a buy signal somewhere around 11:30. Okay, 1, 2 and 3, these 3 candles, and it moved higher. Again it gave a buy entry,
but it hit your stop loss immediately. Next candle में आपका stop loss यहाँ पे hit हो गया, and then it gave a buy entry और price यहाँ से थोड़ा ऊपर है, then market closed. Now if you are looking at the BBNB and the second one I will come, okay, for the sell. पहले वो भी बता देता हूँ, फिर और कुछ जो रूल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. Now this is the 15-minute chart of बैंक निफ्टी लास्ट 2 दिन का. This one is of Thursday and ये कल का चार्ट है. On Thursday we got one buy signal as per the BBNB. यहाँ पे buy signal आया था, it moved higher. Yesterday we got one buy signal, 1, 2 and 3, this 3 candles. In this candle it moved above the second. So हम लोग को तो जैसे ही क्रॉस हो रहा है वो टाइम पे बाय करना है and keep the stop loss and just wait for the market to move. Either your stop loss will get hit or whatever move comes, you then need to look at the exit. But since our stop loss is predefined, okay, so यहाँ पे now the range of Nifty and Bank Nifty has increased due to the volatility. ठीक है, पहले क्या था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे रेंज बहुत छोटा था. निफ्टी वाज समवेयर अराउंड 80 to 100 120 पॉइंट्स काइंड ऑफ थिंग, उतना मूवमेंट होता था, which we can say 1% और 1.25 1.5% वो हो गया. 2% तो बहुत बड़ी बात हो गई थी. In Bank Nifty, the movement was somewhere around 300-400 points. But nowadays, the average movement in Bank Nifty is somewhere around 700-800, or many times it moved by more than 1,000 points in a day. Okay, so इसलिए the candle size is also big. Okay, the candle looks small, but in a number terms, the candle height is of around 150-200 points. So our stop loss is of 150 to 200 points, looking depending on the height of candle. जितना candle का height है उतना अपना stop loss है. तो generally अभी stop loss जो है वो 150-200 point का हो गया बैंक निफ्टी में. निफ्टी में around 70-80 points kind of thing. Okay, it's purely depending on the market and the candle size. ठीक है. So एक बार volatility जब कम हो जाएगा market में, then your stop loss would be small, because the candles का structure would be small. Okay, so बड़ा stop loss है तो target भी बड़ा रहेगा, छोटा stop loss है target भी छोटा रहेगा. Very clear. Now it depends on you whether you can take such risk or not. अगर 200 point का for example बैंक निफ्टी में stop loss है, it's purely depend on your risk appetite that whether you want to take that risk or not. Okay, so let's come back to the example. कल 2 buy signal आए थे. One is somewhere around 11:30 and second one is around 2:45. Okay, and both worked well. This one obviously did not hit its target, 1:1 ही हुआ, but जो अपना एंट्री है उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुआ. Then you can exit somewhere in the profit only. Okay, पॉजिटिव ही M2M रहेगा, and this is a purely intraday strategy. So don't carry your positions overnight based on this system. ठीक है, मैं जो सिस्टम बता रहा हूँ, this works in Nifty and Bank Nifty. Now you can either look at the future chart or spot chart. It's perfectly fine. You can look any of it, but make sure कि अगर आप future chart देख रहे हो तो हमेशा future ही देखो, spot देख रहे हो तो हमेशा spot ही देखो. Okay, don't keep on changing कि 1 घंटा पहले फ्यूचर देखा अभी स्पॉट देख रहे हो, वो मत करो. ओके, एंड इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, सो वी नीड टू एग्जिट द स्ट्रेटेजी ऑन द सेम डे. प्लस इफ वी गेट अ बाय और सेल सिग्नल, सेल वाला मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. इफ वी गेट अ बाय सिग्नल, सो डोंट टेक अ ट्रेड आफ्टर 3. तो 3 बजे के बाद जो भी सिग्नल आ रहा है उसको अवॉइड करना है, बिकॉज मार्केट डोंट हैव मच टाइम टू गिव यू द मूव. ओके, 3 बजे के बाद में जो आ रहा है उसको अवॉइड करना है. एंड इफ यू आर लुकिंग एट 15 मिनट्स चार्ट, देन आवर फर्स्ट सिग्नल विल कम एनीवेज आफ्टर 9:30 ओनली. जो फर्स्ट 2 कैंडल बनेगा उसके बाद में जो थर्ड कैंडल बन रहा है उसमें ही अपना बाय सिग्नल होगा. डोंट कंबाइन 2 days डेटा. ओके,
डोंट कंबाइन लाइक दिस कि प्रीवियस डे का जो लास्ट कैंडल है वो ऐसा था, नाउ टुडेज फर्स्ट कैंडल जो है उसको कंबाइन नहीं करना है, अ डे एट अ टाइम। ओके, तो प्रीवियस डे का डेटा एंड करंट डे का डेटा अब कंबाइन नहीं करना है। ओके, सो एंट्री सिंपल है, आई एम अगेन रिपीटिंग। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ बैंक निफ्टी का ही। Let me first clear this BTNB also. So BTNB is basically both tops not broken. Okay, so I'm just explaining by drawing it again. So first candle, okay, it can be anything. Second candle must make a higher highs and higher lows. Okay, body of the candle can be anything. We are just concerned about the high and lows. तो सेकेंड कैंडल का हाई है वो फर्स्ट कैंडल के ऊपर होना चाहिए, एंड जो लो है वो फर्स्ट कैंडल के ऊपर होना चाहिए। ओके, so second candle is making a higher highs and higher lows. Now the third candle must not break the high of last two candles. So I can say कि फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। so फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली लास्ट 2 दिन का कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा। ओके, एंड योर थर्ड कैंडल मस्ट ब्रेक द लो ऑफ लास्ट 2 कैंडल्स। ओके, सो जैसे ये लो ब्रेक होता है सेकेंड कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होता है, you just need to take a sell entry. Now I'm again explaining the BTNB. Okay, so the BTNB means both tops not broken. BTNB में फिर से explain कर रहा हूँ, जहाँ पे first candle can be anything. Okay, second candle is making a higher highs and higher lows. मतलब फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हाई होना चाहिए, एंड सेकेंड कैंडल के हाई लो के ऊपर सेकेंड कैंडल का लो होना चाहिए। ओके, एंड द थर्ड कैंडल, ये लास्ट 2 कैंडल का हाई क्रॉस नहीं होना चाहिए इन थर्ड कैंडल, एंड योर लो ऑफ सेकेंड कैंडल मस्ट गेट ब्रीच। ये लो जैसे ब्रीच होता है, यू नीड टू टेक अ शॉर्ट सेल एंट्री। ओके, हाई ऑफ द सेकेंड कैंडल वुड बी योर स्टॉप लॉस। For example, high of second candle is say 200 and the low of second candle is 195. So the risk is 5 rupees. 5 rupees risk. Then our target must be 185. So that we'll get 10 rupees reward. Okay. So risk reward is 1:2, लाइक जैसे ही BBNB में है सेम वैसे की वैसे इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड है। सो BTNB का फुल फॉर्म है बोथ टॉप्स नॉट ब्रोकन, बोथ टॉप्स नॉट ब्रोकन। ओके, सो लेट्स मूव टू द PPT, जहाँ पे कुछ रूल्स इसके लिखे हुए हैं। रूल्स वो मिस्ड द BBNB एग्जैक्टली, BTNB exactly उसका उल्टा है। Okay, so if you understand BTNB, you can easily understand the BBNB also. Okay, so BTNB first candle can be anything, any color, any shape, छोटा बड़ा कैसा भी कैंडल हो सकता है। सेकेंड जो कैंडल है वो हायर हाई एंड हायर लो बनाना चाहिए। ओके, एंड द थर्ड कैंडल मस्ट नॉट ब्रेक द हाई ऑफ प्रीवियस 2 कैंडल्स। सेकेंड और एक और रूल है थर्ड कैंडल के लिए कि इट मस्ट मूव बिलो द लो ऑफ सेकेंड कैंडल। इफ दैट हैपेंस देन टेक अ सेल एंट्री विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ हाई ऑफ सेकेंड कैंडल। ओके, कीप अ टारगेट ऑफ 1:2 एंड वंस योर 1:1 टारगेट गेट्स अचीव, ट्रेल योर स्टॉप लॉस बिलो योर एंट्री पॉइंट। जहां पे आपने सेल किया उसके नीचे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो, सो दैट
in any scenario you don't make a loss. Okay, so I'm just showing you some examples. So this is how a BTNB looks like. Okay, as I said, I'm not waiting for closing of third candle because उसमें बड़ा move already आ सकता है. So यहाँ पे you can see कि already closing इतना नीचे है. If you had taken entries at these levels, then intraday में ही अच्छा खासा आपको profit हो जाता है. Okay, so this is how a BTNB gets formed. Your stop loss is the high of second candle. Okay, entry कब लेना है? जब second candle का low break हो जाता है. This is again a daily chart structure of Bharti, जहाँ पे BTNB were there, और previous trend can be anything. I'm again saying previous trend कुछ भी हो सकता है. हम लोग को खाली 3 कैंडल से ही मतलब है, और वो 3 कैंडल अगर फॉर्म होता है in the rules which I shared with you, जो अभी already discuss किया, then you can take an entry. This is again डेली चार्ट ऑफ डॉक्टर रेड्डी, जहाँ पे BTNB बना था और उसके बाद में अच्छा खासा मूव आया. एस्कॉर्ट्स का डेली चार्ट है. नाउ दिस इज बायोकॉन डेली चार्ट, जहाँ पे BBNB BTNB दोनों के एग्जांपल है. सो दिस इज हाउ BTNB गॉट फॉर्म. अगेन BTNB. ओके, ये BBNB बना है. BBNB आई एम अगेन सेइंग फर्स्ट कैंडल कैन बी एनीथिंग, सेकंड कैंडल मस्ट मेक अ लोअर हाई एंड लोअर लो, एंड थर्ड कैंडल जो है वो सेकेंड डे का हाई जब भी क्रॉस करता है तभी बाय करना है. ओके, वन मोर रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थर्ड कैंडल, कि थर्ड कैंडल मस्ट नॉट ब्रेक द लो ऑफ लास्ट 2 कैंडल्स. फर्स्ट और सेकेंड कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए. ओके, एंड जब भी हाई क्रॉस होगा सेकेंड कैंडल का, देन टेक अ लॉन्ग एंट्री विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो which is the low of second candle. Your risk reward must be 1:2 initially. Okay, your 1:1 move gets achieved, you revise your stop loss to cost or above cost. Okay, ये 15 मिनट का चार्ट है BTNB, जो अभी हम लोग ने BBNB के देखे थे. सेम एग्जांपल है ऑफ लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस. ओके, यहाँ पे BBNB बना था एक, एंड दिस वाज द सेकंड BBNB. एट right at the top we got a BTNB also, जो सेल के लिए. in on yesterday's session Monday को ये BBNB बना था, and at top we got a BTNB. okay, second BTNB. okay, और वो भी दोनों BTNB, in fact 3 जो BTNB बने लास्ट 2 दिन में, all 3 worked quite well. now this is the 15 minute chart of बैंक निफ्टी. ये BBNB बना था राइट एट द बॉटम, फिर मूव आया यहाँ पे BTNB बन गया, छोटा करेक्शन आया, नॉट 1:2 बट 1:1, एंड देन अगेन इट हिट योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. देयर यू सी BBNB, ये रहा 1 2 3, दिस 3 कैंडल्स, यू कैन सी द कर्सर 1 2 and 3, यहाँ पे BBNB बना था, एंड दिस इज BTNB राइट एट द टॉप, एंड वहां से अच्छा खासा करेक्शन आया है. okay. Now this is the 5 minute chart of बैंक निफ्टी. ये कल का 5 मिनट चार्ट है. यू जस्ट सी कि कितने एंट्री इसमें मिला है आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज. ओके, राइट एट द बॉटम यू गॉट अ BBNB 1 2 3, दिस 3 कैंडल्स. ओके, इट मूव्ड हायर बट आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है. ओके, अगेन यू गॉट अ BBNB, अच्छा खासा मूव आया, 1:2 गॉट अचीव. अगेन अ BBNB, a decent move, again a BBNB, ये तो बहुत बड़ा मूव आ गया, it's more than 1:4 risk reward. right at the top you got a BTNB 1 2 and 3, a small correction, again a BTNB, again a BTNB for sell. this one is a BTNB which this one is the BTNB which hit your stop loss. यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ, ये BBNB था 1 2 and 3, the red and the yellow one, this one and this one. यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, and see this is the beauty. for example you get a BBNB or a BTNB, एक आपको बाय सिग्नल मिला है, and immediately next candle if you get the sell signal, okay, then what you need to do is you need to do the stop and reverse SAR.
ओके, तो यहाँ पे जो आपका बाय सिग्नल आया, थोड़ा सा मूव आया एंड देन इट फॉर्म अ BTNB, सो आपका स्टॉप एंड रिवर्स हो गया। तो आपने बाय किया था, वो एग्जिट करके आप एक्स्ट्रा सेल कर रहे हो एंड इट फॉर्म अ BTNB, अगेन अ डिसेंट करेक्शन, और यहाँ पे फिर से BTNB लास्ट में बना, जो कुछ खास मूव नहीं आया और साइडवेज ही हुआ, बट एनी वेज यू वोंट be in loss in that trade also. So in overall in 5 minutes chart, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 trades. Out of 10, one hit your stop loss. Okay, I am saying ये कल ऐसा हुआ है. Okay, every day you won't see like that, but uh, if you like, I am practicing it from last 2 years. It's giving a result in the favorable direction for more than 65%. Okay, so it's a very decent strategy wherein the risk reward is also very favorable and you can get the decent moves. Now whatever queries you have, you can post. I would like to reply to all your queries. Okay, now in Q&A there are some questions, so let's take it. Is there any indicator like stochastic or MACD to be used along with BBNB, BTNB? See, you can use RSI or stochastic. So if you are using any indicator, so right now I am using RSI. Okay, so I use RSI along with the BBNB, BTNB. If a BTNB or BBNB gets formed along with the positive or negative divergence of RSI, then it works quite well. Okay, so your accuracy can be better if you are using it with some indicator. Okay. Where do we see the live charts, live candlestick charts, which site? Okay, you can see the live charts on Motilal Oswal mobile app as well as Motilal Oswal's terminal. If you click on chart, you can get the live chart. If you want to look at the web, then there are many websites like TradingView, Investing, wherein you can get the live charts. What is RSI? RSI is nothing but a relative strength index, which shows you the strength in the prices. Can it be used in historic chart of individual stock? See, stocks, if you are using it on daily, it works well. But to be frank, I did not backtested it on stocks, so I'm not aware कि उसमें कितना अच्छा इसका returns है. Okay, but somehow it works. But make sure that if you are using it on stocks, then you use it along with some indicator. Okay, naked इसको use मत करो. In Nifty and BankNifty, you can use it. Only you can trade only based on this strategy. Accuracy, some people are asking, accuracy is more than 60-65%. Okay, you yourself do the paper trade first, see whether you are getting the results or not, then implement. Okay. One more query is whether it works on equity or commodity. Okay, yeah, so it works equity, as I said, Nifty, Bank Nifty. In commodity, I get to know that few commodities like copper, zinc works well on that strategy. Okay, so you can try on that also, but again saying first do the paper trade, or एक बार उसका result you see, once you get the results on your own, then you will have a trust on any strategy, then you implement it. Okay. Can we apply in options as well? Options थोड़ा difficult है because I tried, but options में इतना favorable results नहीं है like which we get into the index. Okay, so but you can do one thing based on the index buy or sell signal. You can take an entry in options as well. Is this strategy for positional? See, this strategy works well for intraday chart. As I said, positional itna nahi hai because on every stock I did not backtest it. To be frank, if you can backtest, that's great.
what's the situation where it does not work? Okay, so this is a good question. I had seen, like in last 2 years, we had seen lot of volatility, lot of lackluster move in the market. So in most of the times, this strategy worked. Okay, but there are some scenarios when the Nifty or Bank Nifty stuck in very narrow range, okay, throughout the day. So in that scenario, either you won't get the signal, buy or sell signal, या फिर signal आ रहा है तो मुंह थोड़ा छोटा आ रहा है. I'm saying very narrow range in a sense कि निफ्टी शायद 40-50 पॉइंट की रेंज में अगर रह रहा है पूरा दिन, तो शायद वो दिन आपको ये स्ट्रेटेजी इतना मुंह नहीं देगा. बट इन दैट केस योर स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल, बिकॉज कि आपका 15 मिनट चार्ट का जो हाई है और लो का जो डिफरेंस है वो भी 15-20 पॉइंट ही रहेगा निफ्टी में. ओके, then actually lot of questions are there. Okay, one question is that can you please summarize the BTNB and BBNB again? Okay, so I'm again saying, so okay, एक काम करता हूँ मैं आपको PPT फिर से BBNB and BTNB I will show you. So this is how a BBNB looks like. I'm repeating the rules. Trend can be anything. First candle can be of any color, any shape. Second candle must break a low of first candle and the high must be lower than the high of previous candle. So last जो first candle है उसके नीचे low और high होना चाहिए. So second candle must make a lower high and lower low. थर्ड कैंडल जो है वो फर्स्ट और सेकंड कैंडल जो है दोनों का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए. ओके, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, दैट थर्ड कैंडल मस्ट नॉट ब्रेक अ लो ऑफ लास्ट टू कैंडल्स. एंड इन थर्ड कैंडल इफ द हाई ऑफ सेकंड कैंडल गेट्स ब्रीच, उसके ऊपर आ जाता है, देन यू टेक अ बाय एंट्री with a low of second candle as a stop loss and keep a risk reward of 1:2. Okay, this is a BBNB. Now BTNB is exactly opposite to the same. First candle can be anything. Second candle जो है वो higher highs higher lows होना चाहिए. Okay, and third candle must not break the high of previous two candles. और जैसे ही second candle का low break होता है, you take a sell entry. Okay, so let's move to the chart. We have 2-3 minutes more. So you can see this is the Bank Nifty future का chart है ये. See, this is again okay 50 minutes chart. You can see the this formation, this type of formation. जहाँ पे एक जो candle है, second candle is making a higher highs, higher lows. Okay. Second candle is making a higher highs, higher lows. And when the low of second candle gets breached, you need to take a sell entry. अभी ये कैंडल इफ यू सी कि लो ब्रेक करने के बाद में क्लोजिंग ऊपर है, डोंट वरी, कीप योर स्टॉप लॉस इन प्लेस. ये जो हाई है ये स्टॉप लॉस है. एंड इफ यू सी द रिस्क, सो दिस कैंडल मेड अ लो ऑफ 19,610 एंड हाई वाज 19,826. सो अराउंड 116 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है आपका, सॉरी 216 पॉइंट्स का. व्हेन द लो गेट्स ब्रीच यू नीड टू टेक अ सेल एंट्री. Okay, ये लो के नीचे, and our target would be somewhere around 400 points, so I can say 19,200 के अराउंड अपना टारगेट रहेगा. So ये एक फॉल आया, अगेन इट कंटिन्यूड और इसने लो बना 19,250 का, so very near to the target price. Okay, here if you see you can see the BBNB one, this red candle, the green one and the red one. So it formed a BBNB. Now you need to take a entry above the high of second candle. So the high was 19,474.90. So I can say 19,475 and the low was 19,335. So the risk was somewhere around 140 points. 140 point का risk था. So our target would be 280 points above this high. So 280 plus 19,475 would be somewhere around 19,750. Okay, so वो अपना टारगेट है, वो ऑलरेडी आ गया 19,800, ये क्रॉस कर दिया था. Okay, so you can use it either on 15 minutes, 13 minutes or 5 minutes. But I'm again saying
कि जो भी आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, स्टिक टू दैट टाइम फ्रेम. Okay, don't keep on changing. If you are using it on 15 minutes, then use it on 15 minutes. If you are using it on 30 minutes, तो वो उसके ऊपर ही रहो, या 5 minutes है तो उसके ऊपर ही रहो. Okay, now in Bank Nifty 5 minutes chart 4 circle कैसे हुआ उससे take a couple of more examples. Shall we use moving average? If yes, then which one? So moving average is something like many people are using different moving averages. So it purely depends on your own trading style and your trading horizon. Some people use 5 days and 20 days moving average, and crossover works quite well. Then if you are using just for support resistance, you can use moving average of 89 days. Then 50 and 200 moving average also works well. So moving average is purely subjective, and you need to decide कि आपको कौन सा use करना है. Okay. Then which is the best intraday time frame? 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes for this strategy. And accuracy you mentioned of how many years backtested data. Okay, now I'm using that strategy for 15 minutes time scale. Okay, I'm not moving to 5 minutes or 60 minutes. I'm sticking it to 15 minutes, but it works in other time frames also. And accuracy, which I mentioned, is of last 2 years. I did not backtested it in the system, but this is the observation. Okay, so because since I don't have the historical data of last 2 years, and since it's an intraday strategy, so in intraday many times what happens that if your stop loss get triggered in the same candle, then that pattern doesn't get like you won't see that pattern in the historical data. Okay, so that's why it's difficult, but yeah, you can practice it. If you have if you can backtest, it's very good. You can backtest it and show the results also, and with observation I'm saying that this works very good, and it's very useful for everyone. Okay, now guys, it's time to wind up this session. See you again. Every day we have a webinar, so like stay tuned and learn something. We share the market outlook, we share the some or other strategies, so that you will get some knowledge in this lockdown period. Okay, stay tuned. Thank you so much. Stay at home, stay safe. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.